So today we will discuss a phase shift oscillator. This is the circuit diagram of a phase shift oscillator. In a phase shift oscillator, this RC network, this is the RC network, which is basically consist of three sections. Here, this is one section, this is another section, and this is another section. So there are three sections, three inverted L shape RC section, which produce a phase shift of 60 degree. Each section, this R1C1, which is connected in an inverted L fashion, will produce a phase shift of 60 degree. As there are three such sections and each section is producing a phase shift of 60 degree, a total of 180 degree phase shift will be achieved from this RC network. The total phase shift achieved by this RC network will be 180 degree. I have already told in my previous lectures that a transistor will produce a phase shift of 180 degree. We have already produced a phase shift of 180 degree with the help of this RC network, where each individual RC section will produce a phase shift of 60 degree. So a total phase shift of 180 degree will be achieved from here, and a further 180 degree phase shift is achieved by the help of the transistor. Here the total 360 degree phase shift will be easily achieved in this way. So now the transistor is connected to the supply with by the help of a resistor RC. The base is connected to the supply with the help of a resistor RV, and the emitter point is connected to the ground with the help of a resistor RE. This is a bypass capacitor. The output is taken from the collector terminal, which is connected to the input. This path is actually a feedback path. This path is actually a feedback path where the output is connected to the input for the feedback purpose. Now, once the circuit is turned on, what will happen? The circuit will oscillate. Now, the circuit is oscillate with a particular frequency. At which frequency the circuit will operate? The frequency of oscillation can be written as F is equal to 1 by 2 pi RC into root over of 6. This is the formula to calculate the frequency at which the circuit will operate, or the frequency at which the circuit will oscillate. Now, let us assume that each resistor is of same value and each capacitor is of same value. So the formula of oscillation will be equal to 1 by 2 pi RC root over of 6. If we are using resistor of 5 ohm, so each individual resistor R1 equal to R2 equal to R3 equal to 5. So we will substitute the value of R as 5. And the capacitor, let us assume the capacitor value of C1, C2, C3 all are equal to 10 microfarad. Then the C value is replaced by 10 microfarad. This is the formula to calculate the phase shift oscillation frequency of phase shift oscillation oscillatory circuit. There are some advantages of using this phase shift oscillator circuit. The biggest advantage is that it is not require any type of transformer for the operation. Previously I have already explained, in a tuned collector oscillator circuit you required a transformer for the operation of the tuned collector oscillator circuit. Here you can clearly see there is no such transformer for the operation of phase shift oscillator. So clearly you can save some money. You don't need to purchase a transformer if you are using a phase shift oscillator. So this is the biggest advantage, that the circuit will look simple, very small, as you are not using a transformer. In this case we are not using any type of inductor also. You can clearly see that you are not using any transformer or inductor in this phase shift oscillator, which will reduce the circuit size as well as the cost to make such phase shift oscillator. The other advantage is that it can produce very low frequency signal. Using a phase shift oscillator we can easily generate frequency of very low frequency signals, which is a great achievement, because other oscillators you cannot produce very low frequency signal, but in a phase shift oscillator we can produce very small frequency signals. The circuit clearly has some disadvantages too. The disadvantage is that it is very difficult for the circuit to start oscillation as the feedback is small.
here the feedback is very small, that's why you can have very difficulty to start the oscillation of the phase shift oscillator. The other disadvantage is that the output which you are getting is very small. So there are basically two disadvantages. The first disadvantage is that the feedback is very small to start the oscillation. To start the oscillation you need the feedback signal to be sufficient, but here as the feedback signal is very poor, it is very difficult to start the oscillation. This is the disadvantage of a phase shift oscillator. And the second disadvantage is that the output which you are getting is very small amount. There are two disadvantages. One disadvantage is that the output is very small, and the second disadvantage is that the feedback signal is very small, that's why you can have a very difficulty to start the oscillation of phase shift oscillator. So basically phase shift oscillator काना थिसी रेजिस्टर कैपेसिटर रो गुटे नेटवर्क टे बना जायसी ई फैशन रे रेजिस्टर और कैपेसिटर से फैशन रे कनेक्टेड थासी. तो इनु काना करायसी ट्रांजिस्टर बाइजिंग लगी रेजिस्टर आरबी आरसी आउ आरई के कनेक्ट करा जायसी. आउ इनु जन फेज शिफ्ट रो कामटा बेसिकली किए करूचे ये रेजिस्टर कैपेसिटर जन कॉम्बिनेशनटा ई फॉर्म रे अच्छे सेटा काम करूचे फेज शिफ्ट रो. ई C1 और R1 रो कॉम्बिनेशनटा 60 डिग्री रो फेज शिफ्ट करूचे. R2 C2 रो कॉम्बिनेशन फर्दर 60 डिग्री, R3 C3 फर्दर 60 डिग्री. सो टोटल 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट हो जावा. इनु तमे इनपुट सिग्नलटा दउछ. इनपुट सिग्नल ई पॉइंट आउ ई पॉइंट ग्राउंड पॉइंट रो अक्रॉस रे इनपुट दिया होचे जेनटा के कि 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट कर दिया जाउचे. इनु 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट हेकरी सिग्नल जनरेट हेतवा. सपोज ई सिग्नलटा साइन वेव एंती फॉर्म रे थिबा तो इनु तो सिग्नलटा आसी जिबा 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट हेथिबा. इटा केन पॉइंट रो बेस पॉइंट आउ ग्राउंड पॉइंट रो सिग्नलटा के कोहा होचे 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल जेनटा कि ट्रांजिस्टर के इनपुट हिसाब रे दिया जाउचे. आउ ट्रांजिस्टर का करूचे फर्दर 180 डिग्री सिग्नल रो शिफ्ट कर दउचे. तो एडवांटेज रे बेसिकली काना होचे सर्किट एडवांटेज ना हमको ट्रांसफार्मर यूज करवा लगे नहीं पड़वार कि इंडक्टर भी यूज ना हवा. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट रे ना ही तुम ट्रांजिस्टर यूज ना ही तुम गोटे ट्रांसफार्मर यूज होचे ना ही तुम इंडक्टर यूज होचे. आउ गोटे बिगेस्ट एडवांटेज इनु काना हमके मिलुचे कि बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आमे जनरेट करि पारुछु इजीली. दुईटा एडवांटेज. गोटे डिसएडवांटेज भी अच्छे सर्किट को बनावार. देखो एडवांटेज रे काना थला दुईटा को कहीदेली नॉट रिक्वायर्ड ए ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर. सेकेंड एडवांटेज इज दैट यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो फ्रिक्वेंसी. तो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के भी आमे इजीली जनरेट करि पारमा जदि आमे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज करूछु. डिसएडवांटेज काना रोचे इट इज डिफिकल्ट फॉर द सर्किट टू स्टार्ट द ऑसिलेशन एज द फीडबैक इज स्मॉल. जेहेतु फीडबैकटा बहुत ही कम रोचे. फीडबैक रे जेन हमर सिग्नलटा आसुचे एटा बहुत ही लो मैग्नीट्यूड वाला सिग्नल थिसी सेति लागि इना हमको बहुत डिफिकल्ट फेस करवा लागि पड़सी सर्किट रो ऑसिलेशन के स्टार्ट करवाटा. और सेकंड डिसएडवांटेज काना रोचे तो सर्किट गिव्स स्मॉल आउटपुट. हमको इनु सर्किट रो जेन आउटपुटटा मिलुचे बहुत ही कम मिलुचे, बहुत ही लो मैग्नीट्यूड रो आउटपुट मिलुचे. इटा तर डिसएडवांटेज होचे. और केन फ्रिक्वेंसी रे सर्किट ऑसिलेट करूचे जदि हमें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R एज्यूम करमा और C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इक्वल टू C एज्यूम करमा ताले जेन फ्रिक्वेंसी रे सर्किट रो ऑसिलेशन हवा सेटा काना हवा 1/2 पाई RC रूट ओवर ऑफ 6. तो एग्जाम रे पढ़ले केन फ्रिक्वेंसी रे ऑसिलेशन करूचे आउ एडवांटेज लिखबार होचे डिसएडवांटेज लिखा होचे. सर्किट रो ऑपरेशन केनता होचे सर्किट ऑपरेशन काना होचे जेतेबेला हमें स्विच ऑन करूछु सर्किट रो ऑसिलेशन होचे गोटे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रो. आ हमर पाखे जेन इन RC नेटवर्कटा रहिचे ये RC नेटवर्क रो तीनटा सेक्शन अछि. इटा गोटे सेक्शन इटा गोटे सेक्शन इटा गोटे सेक्शन. ईच सेक्शन 60 डिग्री रो फेज शिफ्ट कराबा. तो हमको टोटल RC नेटवर्क टोटल नेटवर्क रो केते डिग्री रो फेज शिफ्ट मिलवा टोटल नेटवर्क मिलवा 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट. आ ये ट्रांजिस्टर कराबा फर्दर 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट. तो टोटल 360 डिग्री रो फेज शिफ्ट भी अचीव हो जिवा. इजी अच्छे. थैंक यू.